If you're doing option selling, how many times you have got frustrated? कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, प्राइस स्लाइटली मूविंग अप, स्लाइटली मूविंग डाउन, इसका मतलब यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करें, यहाँ पे किसको कौन से स्ट्राइक प्राइस को दूर करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस को अंदर लेके आए, ऑल दिस कंफ्यूजन के साथ इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, why this is happening? Because traders, you are looking shorter time frame के ही अंदर आप देख रहे हो मार्केट को. So now it's important, let's think big. Let's focus on bigger time frame. Bigger the time frame, lesser the fake signals, lesser the fake move. Okay, smaller the time frame, higher the fake move. And important fact here is capturing direction in the market or sideways. Okay, sideways you have been doing a lot in the market, आपने पहले भी बहुत कर चुके होंगे. Now this video is specially for an option selling directional trading system. अब सीधा बैक टेस्टिंग पहला देख लेते हैं before going forward anywhere. So I have back tested from 20, this report is 2023 to 2025, almost 3 years का back testing data है, right? Because this is December month end खत्म हो रही है 2025 में. So deployed total capital 10 लाख. अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा, 10 लाख का टोटल कैपिटल का मतलब कंप्लीट डिप्लॉयमेंट नहीं. इट विल बी 8.5 लाख टू 9.3 लाख. मतलब ये बचा हुआ 70,000 क्या करोगे, या फिर इन शॉर्ट 9 टू 9.3 लाख, द रेस्ट 70,000 इज बफर. अकाउंट में कभी होना जरूरी है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वन डे मार्केट फ्लक्चुएटिंग डाउन, आपको भी पता है जितना माइनस है that will be deducted from your account. जैसे ही market comes back in the favor in terms of option selling, money will come back again in the account. जैसे ही position you are creating, the trading account margin will fluctuate, right? इसीलिए वो buffer है. To the fact, so deployed capital is total is 10 lakh capital का back testing है. And just for the information, this is a back testing report. यहाँ पे कोई again फैंसी मैजिक मेथड नहीं है. देयर इज नथिंग की गारंटी श्योर शॉर्ट रिटर्न नहीं है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स ना आर ओवर एक्साइटेड जैसे ही बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखते हैं. इसका अप एंड डाउन सिनेरियो देखना इंपॉर्टेंट है. 10 लाख का डिप्लॉयड कैपिटल, सेम कैपिटल 2023 में, सेम 2024, सेम 2025, 10 लाख कैपिटल ओनली. यहां पे मैंने कंपाउंडिंग का कैलकुलेट किया ही नहीं है, राइट? 2023 में जितना प्रॉफिट है प्लस द 10 लाख, ये हो गया कंपाउंडिंग, एवरी ईयर कंपाउंडिंग कैपिटल, ये भी नहीं कर रहा हूं, राइट? सेम कैपिटल ईच ईयर इज बीइंग डिप्लॉयड. And to the fact, overall profit is somewhere around 26 lakh 8,000. So 26 lakh. इसमें हम क्या करते हैं, स्लिपेज, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, स्लिपेज प्लस ऑल द चार्जेस. अब कितना स्लिपेज कितना चाहिए, 1% नहीं 2% कर लेते, 2% स्लिपेज. चार्जेस कितना, 5% नहीं 8% कर लेते. सो टोटल 10% आई एम डिडक्टिंग. मतलब कोई भी सिस्टम है, स्ट्रैटेजी बाहर से दिखने में अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकली यू आर एग्जीक्यूटिंग, स्लिपेज एंड चार्जेस टेक्स अ लॉट. इसीलिए 10% स्ट्रेट अवे डिडक्शन, स्टिल 22.5 लाख. That is almost 225% generated on a 10 lakh capital in a span of 3 years. This is the रिसन. अब ये हम डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, कामनेस की जरूरत है. सो 225%, बाकी तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज ईयरली कितना रिटर्न ये वो. इफ यू वांट, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस 225 डिवाइडेड बाय 3, 75% it has this strategy as given. Again back testing data, purely sharing with you for to make you understand things work in market. आप जितना सिंपल रखोगे, जितना टाइम फ्रेम क्लियर होगा, उतना ही बेटर है. Now other result are there: average trade profit, maximum profit, max loss, the win rate, lose rate, accuracy, 68% win rate, 32% losing rate, average profits on winning trade 49,000, average on losing trade 29, max drawdown,
1,68,000. For the 25 lakh, the max drawdown is 25 lakh generated. Max drawdown is 1,68,000. Chalo, koi problem nahi. It is fantastic. Now, let's understand. Don't ever judge anything because of monthly basis. I always look at on quarterly basis. Up quarterly basis, if I want to just go forward and just show you, पहले एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको भी एक clarity मिल जाए and then we'll go forward. So Jan 2023 से आप देख लीजिए quarterly basis what is being given is 38% of the 10 lakh capital. Same as it is goes on, चीजें आगे जा रहा है. Jan, so next quarter -1%. मतलब अप्रैल से जून तक. Then moving forward, what is this? July to September 13.1%. As this goes on, आपको ये पूरा डेटा एक बार I'll just walk through. October to December, quarter on quarter basis देखना important है. 13%. Quarter on quarter basis. So next Jan 2024, यहाँ पे आप देखोगे 34% quarter on quarter basis. And then as it moves on, ऐसे ही पूरा सिस्टम आपको पूरा ये डिटेल्स वगैरह जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप. आपको ये शीट यू विल गेट एक्सेस टू द शीट. व्हाट्सएप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो. अप्रैल टू जून 2024 28%. ऐसे ही चलता रहेगा. तो दिस का जस्ट मेड इट अ क्लियर क्रिस्प डेटा. दिस इज द टोटल आउटकम. तो 105 ट्रेड्स हैज बीन टेकन. अब यहां पे क्या है, सिंपली इज ओनली डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है. सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ स्प्रेड्स. मतलब कोई भी एक कॉल बेचा है, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो डाउन, सोल्ड अ कॉल, बॉट अ कॉल. अब आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, सोल्ड अ पुट, बॉट अ पुट. दैट्स इट. इतना ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कोई एडजस्टमेंट्स कुछ भी नहीं. नो एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट. ऐसा कुछ सिनारियो है ही नहीं. क्लियर एंड क्रिस्प. नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन, आप बोल रहे हो राइट मार्केट नीचे आ रहा है, कॉल को बेचना है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एज, मेनली मार्जिन बेनिफिट भी बोल सकते हैं, बाइंग अ कॉल. पुट को बेचा है मार्जिन बेनिफिट एंड एज के लिए, बाई द पुट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप. सो नाउ द फैक्ट हियर इज, कैसे पता चलेगा मार्केट विल गो अप, व्हेन इट विल गो अप, व्हेन इट विल गो डाउन. दैट इज द रीजन आई हैव मेड इट एंड कस्टमाइज इंडिकेटर सेलर्स ऑसिलेटर. इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सेलर्स के लिए है. ऑप्शन सेलर्स ऑसिलेटर. फाइन एंड फेयर डील, राइट. इसमें एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है मेरे लिए. ये जो भी, इफ आई एम डाउट कि ये बैक टेस्टिंग डेटा इज इट रियल व्हाट, अब आप पता चल जाएगा. आई जस्ट एक्सप्लेन यू, शो यू. रूल एकदम सिंपल है. मतलब सिनारियो, मतलब डायरेक्शन की सिनारियो कैसे पकड़ते हैं, अप और डाउन कैसे पता चलेगा. यहां पे आप इंडिकेटर में देखोगे देयर आर 3 डेटा पॉइंट्स ऑन द राइट, बॉटम राइट. 0, +2, -2, राइट. सिंपल फैक्ट, इफ दिस ऑसिलेटर इज अबव 0, राइट. आप एक एग्जांपल दिखा देता हूं. यहाँ पे नोटिस कीजिए, ईयर ऑसिलेटर इज अबव 0, राइट. ऑसिलेटर अबव 0 हो रहा है. तो व्हेन इट इज हैपनिंग, आपको ये भी देखना पड़ेगा व्हेन इट इज हैपनिंग. नोटिस कीजिए, एट 11th नवंबर 15:15, इसका मतलब 3:15. यहां पे नोटिस कीजिए टाइम फ्रेम क्या है, 2 आवर्स टाइम फ्रेम. 2 आवर्स टाइम फ्रेम में 1, 2, 3, 3 कैंडल्स कम्स इन 2 आवर, 2 आवर एंड 2 आवर. हो गया. मॉर्निंग 9:15 वाला, 11:15 वाला कैंडल एंड 1:15 वाला कैंडल. दिस इज अ फुल 2 आवर्स टाइम फ्रेम. लास्ट 15:15, दैट इज 3:15 का कैंडल कितनी देर चलता है, सिर्फ 15 मिनट्स. सो यहां पे ओनली 15 मिनट्स. इसका मतलब क्या है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में कैसे डिसीजन ले, चांस ही नहीं. वी कैन नॉट टेक डिसीजन. सो यहां पे आई विल नॉट टेक एनी फ्रेश एंट्री, कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन मैं नहीं करूंगा. ओनली इफ देयर इज एन एग्जिट आई एम हैप्पी टू टेक. यहां पे एक कैंडल क्लोज होने के बाद मेरा रूल सिंपल है, फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा. इसका मतलब क्या मींस, आफ्टर दिस कैंडल क्लोज मार्केट ही क्लोज हो जाता है. देयर इज नो ऑप्शन की कैंडल आई क्रॉस करे, आई विल टेक अ फ्रेश एंट्री. ऑप्शन ही नहीं बचा है, राइट.
सो टू द फैक्ट हियर इज, यहां पे आप नोटिस कीजिए सेम सिनेरियो, हियर इट इज अबव जीरो ऑन दिस 315 कैंडल, कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी इट इज एट 315 का कैंडल. सो डिस्पाइट नोइंग इट इज बुलिश, डिस्पाइट नोइंग इट इज बुलिश, अब मैं नेक्स्ट कैंडल की वेट करूंगा. यहां पे देखिए गैप अप हो गया, प्राइस 2 आवर्स के बाद क्लोज कर रहा है, बट अब ऑसिलेटर कहां पे है, ये भी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रैक. ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, चेस नहीं करने वाले, वेट. अब मैं फर्स्ट एग्जांपल ही क्यों बता रहा हूं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, एंट्री नहीं मिल रहा, वो एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं. प्रैक्टिकली सिस्टम को टॉप टू बॉटम पता होना इंपॉर्टेंट है. राइट, नाउ द फैक्ट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जहां पे आप नोटिस कीजिए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहां पे देखिए इट इज कमिंग बिलो जीरो, कैंडल क्लोज के लिए वेट कर रहा हूं, कैंडल क्लोज हो रही है. राइट, सो नाउ मेरा एग्जीक्यूशन सिंपल, बिलो दिस कैंडल लो, बिलो दिस कैंडल लो माई इंडिकेटर इज शोइंग कि मार्केट इज बियरिश. अब ये सेम चीज मैंने कब किया है, जस्ट नोटिस कीजिए 28 नवंबर 2025. अब सीधा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पे चलते हैं, जस्ट अ मिनट. हाँ, 28 नवंबर 2025, यहाँ पे नोटिस कीजिए दिस इज ऑप्शन एग्जीक्यूटेड. अब यहाँ पे 28 नवंबर कैंडल लो को ब्रीच करना, कब ब्रीच किया, इट हैज ब्रीच्ड ऑन 1 December. यहाँ पे देखिए व्हेन इट हैज ब्रीच्ड द कैंडल लो ओवर हियर, यहाँ पे देख लीजिए व्हेन इट हैज ब्रीच्ड 1 December, ऑन दिस डे इट हैज ब्रीच्ड. तो सेम मैंने एग्जीक्यूट द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट हियर. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आई हैव सोल्ड द कॉल ऑप्शन, मतलब 25,500 का कॉल ऑप्शन आई हैव सोल्ड, राइट, 232 रुपीज प्रीमियम, एंड आई बुक्ड प्रॉफिट एट 156, 75 पॉइंट्स प्रॉफिट. अब ये माइनस वैल्यू क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इट इज अ सोल्ड ऑप्शन. राइट, अब इसमें एडजस्ट में 3,000 इज गॉन, 56,102 इज बीन जनरेटेड. राइट, सेम एवरीवेयर, सारे बैक टेस्टिंग में डेटा इज सेम. नाउ लुक एट रीसेंट ऑनगोइंग या फिर एनी ओल्ड एग्जांपल जहां पे इट हैज नॉट वर्कड आउट. अब यहां पे देख लीजिए, लुक एट दिस सिनेरियो. अब कैंडल व्हेन इट इज इन माइनस, फर्स्ट कैंडल में 24 नवंबर, on the first candle itself it is just, you can see here it is below zero, candle close हो रही है, so below this is my sale. I am bearish below this. जब तक ये not going and closing above the zero level, eye of the candle cross नहीं कर जाता है, I am just staying bearish. Rule simple है, once it is crossed above, until this oscillator is not coming below and closing, इसका मतलब क्या है, आई एम स्टेइंग बुलिश. ओनली द फैक्ट टू अवॉइड मेजर मूव मेरे लिए स्टॉप लॉस है, 40% स्टॉप लॉस. इसका डिटेल्ड वीडियो यू विल गेट एक्सेस टू दिस डिटेल्ड वीडियो, इसमें मल्टीपल डिटेल्स वीडियो आपको एक्सेस मिल जाएगा. बस जस्ट टू एक्सप्लेन यू, एकदम दिखने में सिंपल है, ऊपर जा रहा है तो इट इज अबव जीरो, नीचे बिलो जीरो बियरिश, ऊपर अबव जीरो बुलिश, कैंडल आई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट, दैट्स इट. Now the fact here is it's a 2 hour time frame. How many times a day I need to check? Morning at 9:15, after the 2 hours के बाद जैसे कैंडल हो रहा है 11:15, after the 2 hours 1:15, on the closing basis 15:15, 3:15. Daily just 4 times I need to track the market based on this system. बस इतना ही. उसमें बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मी. आई हैव प्लेस्ड स्टॉप लॉस, आई हैव प्लेस्ड माय टारगेट परसेंटेज, सब कुछ सेट है, सब कुछ अलर्ट बेसिस में चल रहा है. इफ आई एम नॉट इवन ट्रैकिंग द मार्केट एवरी 5 मिनट 10 मिनट, जरूरत ही नहीं है, मार्केट है, मार्केट को जो होना है करने दो. ओके, सो लेट्स चेक दिस 24 नवंबर एक्टिविटी. आप देख लीजिए सेम 24 नवंबर, राइट, 10,000 का माइनस बुक्ड. क्या हुआ, मार्केट इट हैज एग्जीक्यूटेड बिलो दिस, प्राइस नीचे भी गया, करेक्ट, प्राइस गोइंग बिलो. इफ इट हैव केम टू द -2 लेवल, यहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा, दिस इज ओवर सोल्ड, मतलब मार्केट ज्यादा बिक चुका है. इफ इट इज अबव दिस +2 ना, मार्केट हैज गिवन द मोमेंटम,
rather than telling overbought oversold. These are the terminology जो आपको ट्रैप कर रहे हैं, मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ. द फैक्ट हियर इज मोमेंटम +2 के ऊपर बुल्स की मोमेंटम थोड़ा टायर्ड हो सकते हैं, बिलो 2 यहाँ पे दे कैन गेट टायर्ड. तो सेम फैक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटेड, नीचे भी गया, चलो गुड मोमेंटम. बट अल्टीमेटली व्हाट आई टोल्ड, प्राइस रिवर्स्ड हो गया, क्लोज अबव दिस, तो ये मेरे लिए एग्जिट. वेयर इट हैज क्लोज्ड 315 का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है, सो एग्जिट अबव दिस हाई. मतलब बियरिश का एग्जिट, बुलिश का एंट्री, फ्रेश एंट्री ऑन द बुलिश साइड. आप नोटिस कीजिए व्हेन इट इज हैपनिंग. हाँ, 115 का कैंडल एग्जिट मिल रहा है, यस टू द फैक्ट मिल रहा है, एग्जिटेड. कोई ओवर थिंकिंग नहीं. यहां पे देख लीजिए, मार्केट वेंट अगेंस्ट, बुक द लॉस. बट द फैक्ट हियर इज, आपको एक चीज जान होना जरूरी है. टू द फैक्ट आई एम ऑप्शन सेलिंग, मतलब ओटीएम सेल कर रहा हूं, कोई एटीएम आईटीएम नहीं, ओटीएम सेल कर रहा हूं ऑन मंथली ऑप्शन बेसिस. कोई वीकली का गेम नहीं है, कंप्लीट मंथली ऑप्शन बेसिस फोकस कर रहा हूं. दैट टू 1 मंथ अहेड वाला, दूर वाला ऑप्शन आई एम फोकस टू सेल. राइट, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई लेट यू नो ऑन द डिटेल्ड वीडियो एक्सिस. तो आपको बैक टेस्टिंग डेटा है, आई हैव शोन यू हाउ दिस इंडिकेटर्स इज बीन वॉकिंग थ्रू, गोइंग थ्रू, एंड टू द फैक्ट the access to this indicators tool is definitely not free. Okay, definitely not for free. It is definitely the indicator access, the strategy videos, everything will be shared those traders who are interested, but on a paid basis only. So any traders who are interested, want to get access of this entire trading system plus this indicator access, you can just message me on the WhatsApp. WhatsApp link is in the description also. I have also written the number of my WhatsApp. You can just message me and get access to this indicator. Plus you will get access also to the back testing report. ये जो भी है, ये report का भी आपको access, you will be getting it. Straightforward deal है. Back testing report, how the markets is there, detailed video आपको access मिल जाएगा. I just want to make a thing, main important aspect here is, oscillator looks very simple. Yes. Time frame 2 hours, a bigger time frame. But how the simple thing is giving an return without slippage, it is 10 lakh ka capital plus 25 lakh ka return is coming in on the span of 3 years. If I am making a slippage plus charges 10% it is very high in terms of business standards, but करना important है. उसके बाद भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्या, 22.5 लाख, 225% के आसपास. राइट, स्ट्रेट एंड सिंपल डील. So traders who are interested, aram se you can message me on the WhatsApp to get access of this complete trading system plus the indicator plus the detailed all the rules in terms of how I am executing it, what are all the rules of this strategy, everything will be getting access of this. And just for the information, the backtesting data is always helpful to understand how good the strategy is working, how well the strategy is being aligned, whether it is professionally correct in terms of looking the market in this strategy, whether it is professionally correct to focus on this strategy. That is the only aim for the backtesting report, nothing else. Fine, thank you.